Assalamu alaikum guys, this is Kashif and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. A lot of people from different countries, they take coaching from me, and the people around Pakistan, they also contact me to get IELTS coaching. So it's been a wonderful experience teaching different kind of students and about IELTS. And fortunately, IELTS is a course uh, which everybody has to do in order to go abroad. Either your matric, your intermediate, your bachelor's, or your master's. Even you have done PhD, still you need to do IELTS to go abroad, right? And I have the honor of being a small expert of IELTS. Today we'll talk about writing task one bar graph, how to attempt that bar graph. I have already uploaded many videos, especially how to do an overview of writing task one. Today, I'll be making that video in Urdu as well so that you can understand it completely how to attempt that task one, right? सो आपके पास ग्राफ है, बार ग्राफ, इसके तीन हिस्से हैं, पैराफ्रेसिंग है, ओवरव्यू है और बॉडी पैराग्राफ है. पैराफ्रेसिंग वेरी सिंपल. We are given a graph, a given bar chart depicts the UK telephone calls done by the UK people from 1995 to 2002. And there are three different categories, like fixed line calls, national and international calls, and mobile calls. That is paraphrasing, जहाँ पे आपने स्टेटमेंट को रीफ्रेस करके लिखना होता है. ठीक है, अब आगे आ जाते हैं ओवरव्यू पे. ओवरव्यू होता है कि आप टास्क को देखते ही उसकी एक छोटी सी समरी अपने जहन में बनाएं, फिर उसको पेपर पे उतारें या कंप्यूटर पे उतारें. कि फ़ौरन आपने ये नहीं देखना कि कितने बिलियन मिनट्स है, कौन सी कैटेगरीज हैं, क्या है. आप ये देखें, अच्छा ठीक है, यूके टेलीफोन कॉल्स हैं, फिक्स लाइन है, नेशनल है, मोबाइल हैं. आपको हमेशा कलर्ड में ही मिलेगा, ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिलेगा ये एक्चुअल टेस्ट में. तो तीन कैटेगरीज हैं. आप देखें, सबसे ज़्यादा कैटेगरी हमें नज़र आ रही है फिक्स लाइन की और सबसे कम कैटेगरी नज़र आ रही है मोबाइल कॉल्स की. सो इट इज़ very clear, vividly clear, that overall local fixed line calls were the highest throughout the period, whereas mobile calls very low initially, but it experienced a dramatic incline in the last 4 years. That was all about the overview summary जो आपने लिखनी होती है कि सबसे टॉप ट्रेंड क्या है, सबसे वर्स्ट ट्रेंड क्या है. ठीक है, again I repeat कि local line calls were the highest throughout the period, whereas the mobile calls were very low initially, but it experienced a little dramatic incline in the last 3 or 4 years. अगर आप आगे लिखना चाहें, नेशनल एंड इंटरनेशनल का लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखें तो तब भी कोई मसला नहीं. क्यों? वी हैव ऑलरेडी मेंशन द टॉप ट्रेंड एंड द लोएस्ट ट्रेंड. ये आपका ओवरव्यू हो गया, इसमें कोई आपने डिटेल नहीं मेंशन करनी. आगे बॉडी पैराग्राफ में आ जाए, वो कैसे लिखना है, दैट इज़ अ की क्वेश्चन. कि आप इस तरह कभी भी नहीं लिखते कि आप 1995 में लोकल कॉल इतनी थी, नेशनल इतनी थी और मोबाइल्स इतनी थी. कभी भी नहीं. दैट इज़ वेरी चाइल्डिश, नॉट प्रोफेशनल. आपको यही बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि आपने कैसे इसको बॉडी पैराग्राफ को लिखना है. आप बॉडी पैराग्राफ शुरू करें, आप स्टार्ट करें जी. आप पहले लोकल कॉल्स का जिक्र करेंगे, ठीक है, फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे. फिर आप सेकंड में नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉल का जिक्र करेंगे, फिर एंड तक जाएंगे. फिर मोबाइल का जिक्र करेंगे, एंड तक जाएंगे. इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि इसमें पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बताना होता, इसमें सिर्फ आपने ट्रेंड को हाईलाइट करना होता है, बीच में कुछ पॉइंट्स बता दिए आपने. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक एक फिगर को मेंशन करें. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू मेंशन एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल डिटेल इन दिस essay, right? So we'll start from the local calls. Like, firstly, initially in 1995, local fixed line calls were approximately 70 billion minutes. This number increased gradually until 1998, and it touched 90 billion minutes. It remained same in 1999, but after that it started decreasing gradually until it reached its old position, or at 78 billion minutes in 2002. That's it. क्या मैंने बताया कि फिक्स लाइन कॉल्स शुरू में 70 बिलियन या 72 बिलियन मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली थी. ये ग्रेजुअली इंक्रीज हुई. 98 में इन्होंने 90 बिलियन मिनट्स को टच किया, 99 में बिल्कुल सेम रही. हाँ, आगे फिर इनका डिक्लाइन आ गया
यहाँ तक के 2002 में इन्होंने 78 मिलियन बिलियन मिनट्स को टच किया. दैट्स इट. Now we'll talk about national and international calls. They were at 39 billion minutes initially in 1995. They increased gradually and they reached 60 billion minutes at the end of that period. There was no variation during the process, so we'll mention the end straight away. Gradually increased, and at the end it closed in. Now we'll talk about the mobile calls. They were very low, like maybe 2 billion minutes in 1995, and they had a minimal increase in the 4 years, 3 to 4 years. Like 99, it was like 12 billion minutes, but in the last 3 years they experienced an exponential incline, dramatic rise, sharp rise. And if we see the whole picture, they were almost they closed at 49 billion minutes, which was like almost 10 times initially they started. ठीक है. आप 1995 में ये बहुत कम था, 98 9 तक ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 10 बिलियन को टच किया, लेकिन आखिरी 3 सालों में इनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थी. आप अगर ये वट एवर आई हैव एक्सप्लेन, इफ यू राइट दैट इन डिटेल्स, देयर वुड बी मोर देन 150 वर्ड्स. यू डू नॉट अबाउट द वर्ड्स, right? You understand? That was a whole writing task one. There is no conclusion for the task one. You just paraphrase the statement, you write an overview, then you explain the details in body paragraph. So one thing, remember, this formula doesn't apply on all bar graph. That depends on the bar graph and the shape you receive. It's you who has to categorize, who has to decide how I would approach that task. That task is not much difficult, so I told you the approach, how you can approach it. I'll keep uploading the different videos about the different tasks so that you can have an idea how we can approach task one. All right, thank you very much for watching that video. Remember me in your prayers. I'll come with the next video.